हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये नवंबर 22 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके सारे आंसर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 टाइप के टीम स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक टीम, दूसरा है चीफ प्रोग्रामर टीम और थर्ड टाइप है मिक्स टीम। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला है चीफ प्रोग्रामर टीम। तो चीफ प्रोग्रामर टीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि देर इज वन पर्सन हु विल बी द टीम लीडर एंड अंडर द टीम लीडर देयर विल बी अ टीम। सो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर हैविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी कॉल इट एज द चीफ प्रोग्रामर टीम। और ये जो पर्सन है ये है हमारा चीफ प्रोग्रामर। तो चीफ प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एवरीथिंग रिलेटेड टू डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट, writing the software and everything, and under that the team people will work. So chief programmer will give the direction to the team members and team members will work accordingly. तो उसके हेल्प के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे को पायलट, एडिटर, प्रोग्राम क्लर्क, ये सब हमारे पास हो सकते हैं, एंड टेस्टर फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर आता है डेमोक्रेटिक टीम। डेमोक्रेटिक टीम में क्या होता है कि सारे जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल इक्वल। जैसे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक टीम है। यहाँ पे ऑल मेंबर्स आर एट इक्वल लेवल। सो ये जो 5 मेंबर्स है दे ऑल आर टीम मेंबर्स एंड दे ऑल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो इट डज नॉट इन्फोर्स एनी हायरार्की एंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन। मतलब सब लोग डिस्कस करेंगे और जो भी कंक्लूजन आएगा बेस्ड ऑन दैट द decision will be taken. Then a lot of debate and discussion happen in this kind of team. Then आता है mixed control team structure. तो mixed control it is a combination of chief programmer and democratic teams. तो chief programmer team में यहाँ पे क्या है, एक टॉप में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में सीनियर मेंबर्स हो सकते हैं और ये सीनियर मेंबर्स जो है ये आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं एज अ डेमोक्रेटिक टीम। इनके अंडर में आते हैं टीम मेंबर्स। तो ये टीम मेंबर्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो इनके बीच में भी कम्युनिकेशन पाथ होता है। इसीलिए at every level we have the democratic team, but we have the hierarchy of structure as well. So we call it as the mixed team. So ये आंसर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है what is CMM? That is the capability maturity model and what are its various levels. So CMM, this describes the evolutionary path of improvement for software organization from ad hoc process to a mature process. मतलब from ad hoc, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए। फ्रॉम देयर वी हैव टू इवॉल्व टू अ वेरी गुड हाईली मेच्योर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू इवॉल्व द प्रोसेस। सो इसमें 5 लेवल्स है। ये आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। पहला लेवल है हमारा इनिशियल, सेकेंड है रिपीटेबल, थर्ड है डिफाइंड, फोर्थ है मैनेज्ड और फिफ्थ है ऑप्टिमाइजिंग। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है उसमें हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट विदाउट एनी फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। मतलब जो भी इनिशियली प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायरेक्टली हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस। सो द कंपनी इज एट द इनिशियल लेवल। देन यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एकदम एड हॉक है, केओटिक एक्टिविटीज है। फिर नेक्स्ट आता है रिपीटेबल। रिपीटेबल मतलब जहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम कोकोमो या फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कर रहे हैं, या ट्रैकिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या शेड्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो प्रोसेस है तो उसे हमें बार बार करना है। तो वो हो गया हमारा रिपीटेबल स्टेज। फिर थर्ड आता है डिफाइंड। डिफाइंड में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दे आर डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। Then common organization-wide understanding of activities, roles, responsibilities is there, and the process is defined. So we call it as the defined stage or the third stage.
फिर आता है मैनेज्ड, दैट इज लेवल 4। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो quantitative quality goals for products are set, that means we have to achieve those goals. The goals are set and we have to achieve those goals. We have to first measure whether we have achieved those goals or not. So the measured value are used to control the product quality and results of measurement. It helps in improving the performance. And last level, that is optimizing. So optimizing में हमें क्या करना है, statistics collected from process and product, they are analyzed and we have to work towards continuous improvement. So in this way we try to optimize the process wherever things go wrong. So there we try to find out better ways of doing the thing. We can work on better technologies, we can work on better hardware, and we can optimize the thing. So these are the 5 levels of CMM. Now next question is, what is ISO standard and what are the sub characteristics of functionality and reliability of ISO 9126 software quality? So ISO standard, it is defined for life cycle, where ISO has given the standard 12207. It indicates the sequence of process that will produce the software deliverables and the intermediate product that will pass through between the process. So when we are creating a product, we have to follow the ISO standard, and it does not talk only about the end product. It talks about the intermediate product. That means it says that if the process is good, मतलब हम जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, अगर वो प्रोसेस सही है तो डेफिनेटली आवर एंड प्रोडक्ट विल बी गुड. इफ आवर प्रोसेस इज नॉट गुड, देन आवर एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी गुड. सो वी हैव टू गिव मोर emphasis on the process and sub processes. Then comes the sub characteristics of functionality. तो इसमें सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनैलिटी का पहला है सूटेबिलिटी. सूटेबिलिटी मीन्स द product should be suitable for our organization. And then accuracy, the product should give accurate results. Then interoperability means it should operate with other software components, it should interact and work with other components, and we have to identify the degree to which software adhere to application related standards. And then we have to think of security. That means we have to provide access control so that only authentic people can access the software. Then next comes the sub characteristics of reliability. Reliability means the software is reliable. If you open the software, we are able to work on it, then definitely we say it is reliable. अभी रिसेंटली आप लोगों ने चंद्रयान 3 का लॉन्च देखा, तो उसके पहले क्या हुआ था, चंद्रयान 2 it was launched, and when it was landing, at that time there was hard landing, and because of which the lander crashed. सो वो सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं था या वो प्रोडक्ट हमारा रिलायबल नहीं था. तो हमें क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग पे काम करना है, मतलब हमारी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी होनी चाहिए. उसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है मैच्योरिटी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर ड्यू टू फॉल्ट. तो जितना हो सके हमारे प्रोडक्ट में फेलियर कम होना चाहिए. फिर आता है फॉल्ट टॉलरेंस, कितनी बार हमारा प्रोडक्ट फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस. फिर आता है रिकवरेबिलिटी, मीन्स अगर सिस्टम फेल हो गया तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिकवर, एंड वी हैव टू हैव द कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स. Now, next question is, what are the 5 basic strategies of team development? So there are 5 stages. One is forming, where the members of the group, they know one another and they try to come together so that they will be able to work as a team. Then second stage is stopping. यहाँ पे क्या होता है कि टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं बेस्ड ऑन लीडरशिप, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. देन आता है नॉर्मिंग, जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन द work as a team. Then the team will start performing. So whatever task that is given to them, they will start working on the task. And then comes the adjourning. Adjourning means the group
is now discarded or disbands. Now, what is called a balanced team? As per Bellville, the balanced team is if the team have a different type of people and they all are working towards a common goal. So management team rules, what can be the team rules? First is the coordinator, that means the person who is good at sharing meetings. Then the plant or the idea generator, the person who generate new ideas. Then monitor, evaluator, the person who is good at evaluating the ideas. Then comes the shaper, helps to direct the team effort, and the worker means the hardworking person who is actually creating the projects or working on the project. So if the team member is selected properly with all these variations, then only that team will be called as a balanced team. Now next question is, what is testing? Explain test plan and test management. So testing, the objective of testing is to expose as many bugs as possible. So how do we do testing? We have to take each and every program, we have to check whether it is giving output or not, and we have to check it with the expected outputs. Then there are different levels of testing, like we have unit testing where each and every component module is tested independently. Then comes the integration of system testing where the system as a whole is tested and we have to give the inputs to the system and check whether we are getting the expected output or not. And then comes the acceptance testing where we have to show the product to the customer and we have to get their approval for the product. Then test plans. So we have to specify the test environment in which the testing will be done, what kind of softwares, equipments are required for testing. Then we have to create the usage profile, that means how the system will be used. Then what is failure, fault, and we have to test under heavy load so that we can check whether our system is working properly or not. And we have to do the management of testing, that means if any issues are there, we should remove those issues. So if a mistake by a tester, or if there is a fault, or if there is a failure, or if any change is required, so we should be able to identify and resolve those changes. Now the next question is, what do you mean by premature termination and what are the reasons of project termination? So premature termination means if we are closing our project halfway, then it is called premature termination. That means the project is not completed, it is just closed halfway. So there can be various reasons for it.